उत्तर यशस्वी होत सर्व स्पर्धक निरंतर. मी नेक्स्ट स्पर्धकाला आमंत्रित करत आहे. दुसऱ्या स्पर्धकाचं नाव आहे ज्योती मारुती कुंभार. स्वतःचा परिचय. मी ज्योती मारुती कुंभार, प्रदीप पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कुटाळवाडी. प्रदीप पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कुटाळवाडी. रागादिरोगान सत्तान शक्तान शेषकाय दत्तान शेखान औत्सुक्यममारतिकान्तगान योग अपूर्व वैदाय नमोऽस्तु तस्मै शैत्रजानं दोषानां श्रमेण परमौषधं बस्तिरे कुवम्नं तथा तैलं कृतं मधु हृदयात्मादि विज्ञानं मनोदोष औषधं सरम् विषक्रमानुपस्थाता रोगी पादत तुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तत्तनुगुणं तक्षसिद्धान्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्माशु कीदृशं बहुकर्मं बहुगुणं सम्पन्नं योगम् औषधम् अनुरक्तः सुचित्तक्षो बुद्धिमानः परिचारकः आड्डरोगी विषवशो लाभकः सर्वमानवी मानसे द्विसुखी मार्गाते क्रमात् षट्कभस्नुः शिशिरो अतः सन्तश्च ग्रीष्मवर्षा शरद्मा शिशिर अतः श्रीस्तेस्तु विद्यादयन उत्तरम् आदानं तत्तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् वेगाने धार एकवात विमुक्त रक्षकतु वस्तुतां निद्राकाश श्रमश्वास जुम्बा अशंचन्ति रेतसा रोगाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचने एकु संशोधने शुक्तान् देशापुनरुद्भव रोगास्य केऽपि जायते वेगो विघ्नधारणं निर्दिष्टं साधनं तत्रं भूयिष्ठम् एकुतान् प्रति गुरूणाम् अद्य सर्विकं लघूनां नातिवृत्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजीर्यति जिज्ञासने तु भेषजं युजास्तद्गुरुदरे दोषशेषार्थपाकार्थम् अग्निसन्दुक्षणाय च शान्ति आमविकाराणां भवति कोपसर्पणा त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् दोषधातुमलाङ्गूलं सदा देहसदं चलम् उत्साह विश्वास निश्वास चेष्टा वेगप्रवर्तने सम्यक् त्याच धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च अनुगृह्णाति विकृतो पित्तपक्ष्मदर्शने शुद्धतूढ ऋषि प्रभावेनाधीशवरकं मार्दवे श्लेष्मास्तिरत्व स्निग्धत्व सन्निबन्धक्षमादिभिः निरनं जीवनं लेपो स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादस्य धातूनां श्रेष्ठं कर्म प्रमात्मिकं पक्वाशयं कटिशक्ति श्रोत्रस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानोपातस्य तत्रापि पक्वाधानविशेषतः नाभि आमाशयो स्वेदो लसिका रुधिरं रस मुखस्पर्शनं च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषतः पुरकण्ठशिरप्लोम पर्वान् आमाशय रस मेदो घ्राणं च जिह्वाश्च कफस्य सुतराम्बुरम् ओजो वृद्धो विदेहस्य पुष्टिबलोदय ओजस्सुतेजो धातूनां शुक्रान्तानां परस्कृतं हृदयस्थम् अभिरापि देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धं ईशलोहितपीतकं यन्नाशो नियतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति ओजक्षेत्रकोपशुद्धान् शोकश्रम आदिभिः विभेति रूपलोभिक्षं दहयते व्यतितेन्द्रिय दुष्टायो दुर्मनारुक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षये ओजक्षेत्रकोपशुद्धान् शोकश्रम आदिभिः जयो वृत्तिविधेयस्य पुष्टिबलोदय पिताहितं सुखं दुःखं पुष्टिनाशं बलाबलं कृशताप्लिकताज्ञानम् अज्ञानं जीवितं रज पुष्मलकल्पवरत्वेन धातुम् अद्यपपाचितं पुष्टम् आवाशयगतं रसम् आमोगत् न चक्षते गायामात् पुष्मलात्यक्षात् अहिताचरणात् अपि कोष्ठशाखास्य वर्माणि धृत्वान् मारुतस्य च दोषायन्ति तथात्योक्तं श्रोतमुखविशोधनात् वृद्धात्तविशन्दात्वाकातं कोष्ठं वायोश्च निग्रहात् शान्ति आमविकाराणां भवति तु अपतर्पणा त्रिविधं दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् अजिज्ञेभिषजम्पानि जिज्ञेवारि बलप्रदम् अजिज्ञेभिषजम्पानि जिज्ञेवारि बलप्रदं भोजने च अमृतम्पानि भोजनान्ते विषप्रदम् निधाने माधवे श्रेष्ठ
अन्यदोषापि एवाति दृष्टव्य अनन्यमूर्छना तो द्रव्यविषयस्य श्रद्धांजली. त्यानंतर तिसरा स्पर्धक संस्कृती सुधीर नगरकर. माझं नाव संस्कृती सुधीर नगरकर. कॉलेजचं नाव सावकार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सातारा. रागादिरोगान शतदानुशक्तान अशेष कायस्त्रचितान शेषान औत्सुक्यमोह अर्तिदांचगान योगपूर्व वैद्यायन वस्तु तस्मै शोधनं शमनं चेति समासारौषधं विदं शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं वस्तिर्विरेको अमनन्तता तैलमृतं मधु धीदैवात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् विषप्रमाणकस्थाकारोहि पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्विषं प्रत्येकं न च दुर्गुणं दक्षस्तीर्थार्थशास्त्रतो दुष्टकर्माणु चेदुषम् दक्षस्तीर्थार्थशास्त्रातो दुष्टकर्माणु चेदुषम् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यम् औषधम् अनुरक्तौ सुतीर्थो बुद्धिमान् परिचारको आर्यरोगिणी सर्वशो नामः सर्वमानपि मासांची संख्या मामलादेही षडुतो अप्रमादसुतं शिशिरो अथवा वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाच रजसं शिशिरादयस्य दिस्तैस्तु विद्यालयमुत्तमम् आदानश्च ददाहते गृहं प्रतिदिनबलं वेगानुधार एव तमेव लक्षवतो लक्षणं निद्राकाशश्रमश्वासविश्वासु सर्वीवेदसाम् रोगाः सर्वे विजायन्ते वेगो निर्णधारणैः निर्दिशं साधनं चेति निर्दिष्टं साधनं तत्र भविष्यति तामप्रति रोगाः सर्वे अपि जानन्ति रोगाः सर्वे अपि जानन्ति दोषाः किञ्चित् कुप्यन्ति चितालम्बनपाचनैः ये तु संशोधनैः निषिद्धं तेषां पुनरुद्भवः अथर्वगीता त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियरूपशमं कृतवान् अथर्वगीता शान्तिः पक्वाशयकपि सति श्रोत्रस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं पादस्य तत्रापि पक्वादनं विशेषतः नाभिनेत्र आमाशयोदिरं स्वेदो रसिकारुदिरं रसः मुखस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः उरकण्ठशिरोक्लोमो पर्वण्यामाशयरसः मेघघ्राणं च जिह्वास्य शीतलाङ्गुरः हिताहितं सुखमृतम् आयुस्तस्य हिताहितं मानस्य तस्य यत्रोक्तं आयुर्वेदस्य उच्यते नित्यम् आहारविहारसेवी
नित्यम आम्हाला विहारचे थँक्यू. संस्कृती याच्यानंतर मी सायली धनाजी पाटील हिला आमंत्रित करते. माझे नाव सायली धनाजी पाटील, BMS फर्स्ट इयर, प्रदीप पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बुलढाणा. रागादिलोकान सत्तान शक्तान शेषाय प्रसुतान शेषान सुख्यमोह अतिलगामे पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं वस्ति विरेको वमनं तथा तैलं कृतं मधु द्विधयात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषद्रव्यानुपस्तादारोगी पादजदोषव्यं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षश्रीपाकशास्त्रातो दुष्टकर्मासु चेतिषः बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तसुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारक आढ्यरोगी विषग्वश्य ज्ञापक सत्त्ववानपि मासिक विसन्ति मागादे क्रमादशयुधसुता शिशिरोदक सन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिराद्यास्तु विस्तैषु विद्यायनम् उत्तरम् अदानं च तदा दत्तेन्दूनां प्रतिदिनं बलं वेगान् धारयित्वात् विमुद्रक्षोत्रक्षुदां निद्राकाशमश्वास शुम्भाशु च तिरेकसा रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदिनधारिणे निर्दिष्टं साधनं तत्र विष्णवेतु तान् प्रति दोषा कदाचित् उत्पन्ति चेतालब्धनपाचने हेतु संशोधने श्रुता न तेषां पुनरुद्भव भेषक्षपीते पथ्यम् आहारे भ्रुवनक्रमाशादिषष्टिकगोधूमं मुद्गमांसभृतादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानम् इन्द्रियोक्षं स्मृति देशकालात्मविज्ञानं सदवृत्तस्य अनुवर्तनम् अथर्ववेदा शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्जनम् बुद्ध्याग्रस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शितः विजागन्तु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्ते नित्यमिताद्विहारसेवी समीक्षकारी विषयासक्तस्दाता समसत्यपरः क्षमावानाप्तसेवी च भगत्यरोगः गुरूणामर्धसोहित्यं लघूनां नातितृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखमियावद्विजयति जिज्ञासने भैषज्यं युञ्जात्सप्तगुरुत्तरे दोषशेषस्य पापार्थम् अग्नेयसंरक्षणाय शान्तिरामिकाराणां भवति त्वपतर्पणां त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजे दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य तञ्चल उत्साहश्वासानिश्वासचेष्टा वेगप्रवर्तने संवेदत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च अनुग्रहणातिविकृतः इत्थं भक्तुष्मदर्शने श्रुतृरुचिप्रभामेधाशौर्यतनुमार्दवेति श्लेष्मास्तिरत्वस्निग्धत्व सन्धिबद्धक्षमादिभिः तीननं जीवनं लेपस्मेरोधारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमाश्रितम् ओजस्तु तेजोधातूनां शुक्रान्तनां परं श्रुतं हृदयस्थम् अपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनं निष्पद्यन्ते यतो भावा विविध देहसंशय ओजक्ष्यते कोपक्षुद ध्यानशोकशमादिभिः विवेकी दुर्बलो भीक्ष्णं ध्यायति व्यथिते इन्द्रिय दुच्छाय दुर्मना दुक्षो भवेच्छामश्च तच्छये जीवनी औषधि क्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ओजोवृत्तिः देहस्य दृष्टिपुष्टिबलोदया पक्वाशयकटी सत्यशोत्रास्ति पचनेन्द्रिय स्थानमात्रस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरमाशय स्वेदो रसिका रुधिरं रसः मृगस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्चैत्रोक्तम् आयुर्वेदसो उच्यते अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि फलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् यदि बहिर्दोषात् पञ्चदा शोधनं च तद्विरोहगमनं कायाशिरे विभो अस्त्रविस्मृति निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाकट शारीरे सुश्रुतस्य चरकत्सु चिकित्सते क्वचित् धर्म क्वचित् अर्थ क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला. ओळख श्लोकात दडलेली
आणि विवेक संस्काराचा हा मंगल सोहळा आज फुलणार, प्रत्येक स्पर्धकाच्या सादरीकरणाने सभागृह दुमदुमणार. यानंतर पुढील स्पर्धक आहे हर्षदा लहू गोकुळ. हर्षदा लहू गोकुळ, इयत्ता फर्स्ट इयर, प्रदीप पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सुधागड. हर्षदा लहू गोकुळ, फर्स्ट इयर. स्टार्ट. यानंतर पुढील स्पर्धक आहे आकांक्षा चंद्रकांत वाघ.
प्रदीप पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फुटाणे. स्टार्ट. रागादियोगान सदगानुशक्तान शेषकाय प्रसिद्धान शेषान औत्सुक्यमोहारहिताचकान योगूपवैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. शरीरदानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् अस्ति विवेको गमनं तथा तैलं मृतं मधुं. हृदयात्मनि विज्ञानं मनोदो औषधं परं निषकद्रव्यानुपस्तादा रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं. दक्षतीर्थात् शास्त्रार्थो दुष्टकर्माशुचिर्विषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम्. अनुरक्त शुचिर्दक्ष बुद्धिमान् परिचारको आढ्योरोगी विषक् वशो ज्ञापको सर्ववानपि. मासे द्विसन्धि मार्गाद्ये क्रमात् शततव स्मृता शिशिरोतः सन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाशरधीमा. शिशिराद्य त्रिभिक्षैतु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं स तदाब्दते नूनां प्रतिदिनं बलं. वेगान् न धारयेत् वातो विमुद्र क्षवतुर्दक्षुणां. निद्राकाशश्रमश्वास झुम्बा अश्मुच्छन्दिरिक्तसां. रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगो विरनधारणे. निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठमेतुकान् प्रति. दोषा कदाचित् कुप्यन्ति चित्तालम्बनपाचने. ये तु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः. भेषजक्षपि ते पथ्यम् आहारे गृह्णनं क्रमात्. शालीषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिः. त्यागप्रज्ञापराधानम् इन्द्रियोपशमस्मृति. देशकालात्मविज्ञानं सदवृत्तस्य अनुवर्तनम्. अथर्वविहिता शान्ति प्रतिकूलग्रहार्जनम्. भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक्. अनुत्पत्तये समासेन विधिरेष प्रदर्शित. नीच आगन्तुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये. नित्यं निताहारविहारसेवी समीक्षकारी विशेषो आसक्त. दाता समसत्यपर क्षमावान् भक्तोपसेवी च भवत्यरोग. गुरुनाम अर्थसौमित्यं लघुनाम न अतिकृतता. मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजयति. चिन्नाशने तु भैषज्यं यावत् युञ्जात सप्तगुरूदरे. शालीषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिः. शान्ति आमविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्ते. त्रिविधं त्रिविधे दोषे हस्तं वीक्ष प्रयोजयेत्. दोषधातुमलामूलं सदा देवस्य संचल. उत्साह उच्चवास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने. सम्यक् गत्याच धातूनां अक्षाणां पाठवेन च. अनुगृह्णात् विकृत पित्तं पत्युष्मदर्शनं. श्रुतकृत रुचि प्रभा मेधादि शौर्यतनुमार्दवे. श्लेष्मास्थिरत्व स्निग्धत्व हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं. मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते. विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते. सुखसौन्यकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव च. आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने. जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यमुपजायते. अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं. भोजनान्ते च अमृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्. पक्वाशेकटिसक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शेन्द्रियं. स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वाध्मानं विशेषतः. नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरं रस रूपस्पर्शनं च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषतः. भूरकण्ठ शिरक्रोम पर्वाणि आमाशय रस रूपस्पर्शनं च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषतः. व्यायामात् उष्मण तीक्ष्णात् अनित अक्षणात् अपि. कोष्ठशाखा अस्ति मर्माणि तद्वातमार्गस्य. खूप सुंदर आकांक्षा. यानंतर मी पुढील स्पर्धकाला आमंत्रित करते. जुवेरिया मुसा मुल्ला. जुवेरिया मुल्ला. साक्षी सचिन माने, शहरात आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यड्राव इचलकरंजी, फर्स्ट इयर. स्टार्ट. हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य खूपदा
एकच दोघांनी स्टार्ट करा. स्टार्ट. हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानस्तस्य यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते. निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थानेन वाग्भट शारीरे शुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते. क्वचित धर्म क्वचित मैत्रिक चिदीर्थ क्वचित कर्माभ्यास क्वचित चिकित्सा. रागादी रोगान् सततां शक्तान् अशेष काय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जगानां यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. शोधनं शमनं चेति समासार्थौषधं विधा शरीरजाना दोषाणां क्रमेण परमौषधं. बस्ति विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्य आत्मधिविज्ञानं मनोदोष औषधं परम्. विषद्रव्याणि उपस्थात रोगीपादचतुष्टयं चिकित्सस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं. दक्षतीर्थार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम्. अनुरक्त शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारक आड्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापक सत्त्ववानपि. मांसे द्विसंख्ये माघाद्ये क्रमात् षड्ऋतवस्मृत. शिशिराद्ये वसन्तच्चे ग्रीष्म वर्षा शरद्हिमा. शिशिराद्ये त्रिभिः तेतु विद्यात् ऐणम् उत्तरम्. पक्वाशयकटिशक्ति श्रोतास्ति स्पर्शेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधाम विशेषतः. दोषधातु मलामूलं सदा देहस्य तं चल. उत्साह उच्छ्वास दोषधातु मलामूलं सदा देहस्य तं चल. उत्साह उच्छ्वास निश्वास. प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग सर्वदोषक्षयो भवेत्. अयुक्त अभ्यास सुदृढ रुचि प्रभामेधा. वेगानं धारयेत् सदा वातपित्तमूत्र शवद्रुतशुद्धा. विद्राकाश. धन्यवाद साक्षी. प्रत्येक स्पर्धकाचे सादरीकरण अत्यंत सुंदर होत आहे. सर्व स्पर्धकांना आमच्या शुभेच्छा. प्रेक्षकांना ही विनंती आहे की प्रत्येक स्पर्धकाचे उत्स्फूर्त टाळ्यांनी स्वागत करून त्यांचा उत्साह वाढवावा. यानंतर मी सृष्टी विनोद पाटील हिला आमंत्रित करते. BMS फर्स्ट इयर शांताबाई शिवशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज. रागादिरोगान् सततान् शतकान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहालतीदान् च धानं यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं. बस्ति विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु
धैर्यात्मानि विज्ञानं प्रवीण परमौषधं दक्षतीर्थार्थशास्त्रातो दुष्टकर्माशु चिविशत् बहुकल्पं बहुदिनं संपन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तसुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः आढ्यरोगी भिषक्पशु ज्ञापकः सत्त्ववानपि वेगानधारी एकवाद विमुद्र क्षौरिकृषुदा निद्राकाशश्रमश्वास शुभाश्रुचर्दिवेदसां रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वैपोदीरणधारणैः मासर्विसक्तमाघ्यते क्रमान्तषट्कृतव स्मृता शिशिरोत्तवसन्तश्च कृष्णवर्षा शरदिमाः शिशिराद्यास्तिभिस्तैः विद्यागयमुत्तरम् आदानय च तदा दत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थो क्वचित् यशः कर्माभ्यासः क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला निधानं श्रेष्ठ माधवः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरो श्रेष्ठ सुश्रुतः चरकस्तु चिकित्सते दोषा कदाचित् कुप्यन्ति दोषधातु मलामूलं सदा देहस्य तैजतः उत्साह उश्वास निश्वास चेष्टा वेगधारणिः पीननं जीवनं एव स्नेहो धारणपूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म प्रमाणमृतं स्निग्धं सोमात्मकं शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थम् अपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनम् आश्रयस्ते नाशाय ते विहरत्वतः पाचनदीपनैस्नेहस्नानः स्वेदैश्च परिष्कृतान् जय एव जये दोषं वितन्त्वविरोधयन् सर्वकोपे बलियांसं शीर्षदोषाविरोधतः प्रयोगः शमयेत् व्याधिमेकं योनिमुदीरयेत् नासविशुद्धशुद्धस्तु शमयेत् यौनकोपयेत् व्यायामदुष्मनसैष्णा विविधाचरणादपि दहिताचरणादपि पुष्टाच्छात्रास्ति मर्माणि विगतवान् मारुतस्य च तथा तेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् वृद्धाभिषन्दनात् वाकात् कोष्ठं वायुः च निग्रहात् त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमो स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानम् अथर्वविहिता शान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं भूतार्थस्पर्शलोपायु निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासा योगेन सर्वरोग संभवः दैवम् सुंदर सृष्टी यापुढे मी स्पर्धकाला आमंत्रित करते राठोड राजनंदी शांताबाई शिवशंकर आरवी महाविद्यालय प्रधान अहम प्रथम वर्ष छात्र अस्मि योगानुशकाय प्रसुतानुशेषान औत्सुक्य मोहालतिकार्यकान योगपूर्ववैद्याय नमस्कृतस्मै शरीराणां दोषाणां क्रमेण परमस्तरं वस्तिविरेकौगणं तथैलं कृतं मधुपीड्यजन्मनिविघ्नं मनोदोषौषधं रक्षस्तीर्थशास्त्रार्थ दृष्टिकर्माची विषयभूतत्वं बहुगुणं संपन्नं योगमौषधं बुद्धिमानतंत्रार्थ आद्यरोगींच पश्यज्ञापकसत्वानिः विषग्रवाणपुस्तकारोगिपादचक्षं केतुकस्य नदीचं
मासे दिसंकर मार्गात कमा सुरुवात वसंत कृष्ण वर्षा शरद महा श्रद्धेची दिसते की विद्यालय आगाण्याचे विद्यालय प्रतिदिनं वेगानं झाले वार्ता विनियोग मुद्रावाची समाजवाद जंगलातून शक्ती एक असा योगासली जायते वेगवेगळी रणधारणी नितीशन साधनत्र देवशाकदाची कुटुंबी जिताला वाचणी एक संशोधन विधानाचे शांत झाले त्याच्यापेक्षा शक्ती महादेव गणपती स्वातंत्र्य त्यागप्रज्ञा बलादान योग समस्या देशकालातील विज्ञानाचे शांत अतर्किका शांती प्रतिकूल ग्रहार्चना प्रतिकूल अतर्किका शांती प्रतिकूल ग्रहार्चना विगत स्पर्शोपाय निर्दिष्ट अनुसते समासेन विधिरेषा प्रदर्शित निरागम स्वीकारांना परिणामांचे शांती नित्यमुखहार विवाद सेवी समीक्षक विशेष दाता समस्कृत बरच मावाना प्रतिजरी मूलवर्ग सौविध्यम लग्न आणि नाट्यचित्राला मात्रा प्रमाणाचे विशेषण शिकवून यावरती जीवे दोषदा तुम्हाला मुलांसुद्धा देवाचे काही सर्व उत्साह श्वास विश्वास चेष्टा वेगळं प्रवर्तन संगीताच्या जातून अक्षरांना पाठवेलीचं अनुपूर्णाचे चित्रप्रभावीला दिशेवेदन मार्ग येईल रेशमा जीवन लेबल नेम झाला रोगपासून धातू नामशेषण कर्मक्रमास ओजिस्ते धातू नामशेषण दानपरास देश मुक्ती करता मीटर समाज मुक्त मिशल गवित विनाश नाशो ओजिस्ते धातू नामशेषण दानपरास देश मुक्ती करता अपशक्ती शक्ती स्रोतास स्पर्शनी वेदना वादच्या रूपात भगवान मानवचक्राचे एक उत्तम आई आदित्यचे नमस्कार जन्मांतर सरस्वती दारिद्र्य उपचारी आजकेची नासा येथेची दुनिया भारतात काहीच नाही स्थान स्वदेशी वर्ग Edilien Winkel Champagne dafür bringt, die Übung und Paris über Rekords produziert. खूप सुंदर त्यानंतर तुमच्या स्पर्धकाला आमंत्रित करते अनामिका शिगावान. अनामिका शिगावान BAMS प्रथम वर्ष शांताबाई शिवशंकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अँड कॉलेज. नागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसन्नान् शेष औषध्यमोहारहिताञ्जकान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं भस्तिर्विरेकोऽवमनं तथा तैलमृतं मधु लीलयात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषद्रव्याणुपस्ताचा रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षसिद्धार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्माशुचिर्विष बहुकल्पं बहुगुण सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तशुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः अर्थोरोगी सर्वस्व ज्ञापकः सत्त्ववानपि मासयति संख्यैर्माघात्ये क्रमात् शकृतः स्मृता शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदृतुः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम्
भूविष्ठं येतु तां प्रति दोषां कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारे गृहणं क्रमात् शालिषष्टिको गोधूमो उद्गमांसवृतादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्वगीता अशान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शितः शान्तिरामविकाराणाम् उत्पन्नानाय च शान्तये दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य तैजतः उत्साहोश्वासनिश्वास चेष्टावेगप्रवर्तनैः सम्यगत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च अनुगृह्णान्तविकृत पित्तं पक्तुष्णदर्शनैः सुदृढरुचि प्रभामेदाधीशौर्यतनुमार्दवै श्लेष्मास्तिरत्वस्निग्धत्व पित्तं पक्तुष्णदर्शनैः श्लेष्मास्तिरत्वस्निग्धत्व सन्धिबन्धैक्षमादिभिः प्रीणने जीवनं लेभौ स्नेहोदाहरणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमास्मृतम् पक्वाशयकटी सक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानवार्तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरामाशय स्वेदो रसिकारुधिरं रस हृत्स्पर्शने च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः उरगण्ठशिरक्लोमो पर्वाण्यामाशयो रस मेधोघ्राणे च जिह्वा च कपस्य सुतरामुर ओजस्तुतेषु धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धसोमात्मकं शुद्धं मीशल्लोहितपीतकं यन्नाशेने तन्नाशो यस्मिन् तिष्ठति हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं माने च तच्च यद्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते इदानीमादव श्रेष्ठ वाक्सूत्रसाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरवस्तु चिकित्सिते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यशः कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसौधकम् आरोग्यं खूप सुंदर अनामिका. ज्ञानाचा दीप तेवत राहो, संस्कृतीचा वारसा फुलत राहो. श्लोकांच्या या पावन स्पर्धेत प्रत्येकाचा आत्मविश्वास वाढत राहो. यानंतर पुढील स्पर्धक आहे अर्पिता शिंदे. अर्पिता शिंदे, प्रथम वर्षीय शांताबाई शिवशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज जर. रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शीर्षकाय प्रसुतान् शीर्ष औत्सुक्यमोहारतीतान् जगान् यो पूर्ववेद्यानमोऽस्तु तस्मै शरीरजनां दोषाणां क्रमेण परमौषधं स्वस्ति निरेकुवानं तथा दैव्यवृतं भीषद्रव्यानुपस्याता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सा तस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षतीर्थास्तु शास्त्रातु दुष्टकर्मासु चिर्विषं बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्य औषधम् अनुरुक्तसु चिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो योगी भीषकश्चो ज्ञापकः सत्वानपि यदीर्येव हि दोषान् पञ्चराशोधनै च तत् विरुहो वहनकाय शिरोरेकोऽस्त्रविस्तृतिः चय एव जयदोषं कुपितं कविरोधयत् सर्वकोटि बलीयंशं शेषदोषाविरोधतः प्रयोगः शमयेद्याभिमेकं यो अन्यमुदीरयेत् नासविशुद्धशुद्धस्तु शमयोद्यमतोपयेत् व्यायामादुष्मनस्तैष्णां दहिताचरणादपि कोष्ठचापास्ति मर्माणि धृतत्वान् मारुतस्य च तथा दीर्घस्रोतो मुखविशोधनात् वृद्ध्यं विषन्दनात् पापात् कोष्ठावायुश्च निग्रहात् उष्मणोऽल्पबलात्
जलत्वेन धातुमाध्यमपाचितम् रुद्रमभ्यविशस्येव वदन्तामस्य सम्भवम् अन्यदोषेभ्य एवापि दृष्टेभ्यो नन्यमुच्चना रुद्रमभ्यविशस्येव धातुमाध्यमपाचितम् आमेन तेन सम्पृक्ता दोषदुष्टा च दूषिताः सामायिक्युपदिश्यन्ते ये च रोगादुद्भवाः सर्वदेहप्रविस्तृतान् सामान् दोषान् निहरे लीनां धातुसमुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव आश्रयस्य हि नाशाय येषु दुर्निरक्ततः स्थानस्वेदस्परिष्कृतान् पक्वाशयकनी शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वादनं विशेषतः नाभिरमाशयरस स्वेदरसिका रुधिररस दृक्स्पर्शं च पित्तस्य नाभिरत्नं विशेषतः पुरकण्ठक्षीरभ्रमो कर्मण्या अमाशयरसः मेरुघ्राणं च जिह्वा च कपस्य सुन्दरामुरः दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य दैचलः उत्साहश्वासनिश्वास चेष्टावेगप्रवर्तनैः सम्यगत्या च धातूनां अंशानां पाटवेन च अनुगृह्णातविकृत पित्तं पक्युष्मदर्शनैः श्लेष्मस्थिरत्वसिद्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिः क्रीडनं जीवनं लेपः स्नेहोदाहरणं पूरणे हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस उच्यते वेगानधारे यद्वात विमुद्रक्षवदृक्षुधां निद्राश्वासश्रमश्वास जुह्मा अश्रुचतिरेतसाम् रोगसर्वेऽपि जायन्ति वेगोदीरणधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं येषु तान् प्रति दोषात् कदाचित् कुप्यन्ति धन्यवाद अर्पिता. यानंतर पुढील स्पर्धकांना मी आमंत्रित करते. प्राची दत्तात्रय रनवणे. BMS फर्स्ट इयर, शांताबाई शिवशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज. रागानि योगान् सततानुशक्तान् विशेषकाय प्रस्तुतान् शेषान् औद्युक्यमोहारनिदान्तदानि योगपूर्ववैद्याय मुक्तस्मै शोधनं शमनं चेति समासादौषधं वृथा शरीरत्राणदोषानं क्रमेण कर्मौषधं बस्तिद्विरेको वमनं तथा तेलं कृतं मरुतिधैर्यात्मानि विज्ञानं मनोदोषौषधं परं चक्रव्रणं पश्चात् रोगिपातचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षतीर्थार्थशास्त्रार्थ दुष्टकर्मासुनिर्दिशं बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योगौषधम् अनुरक्तसुचिं दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यरोगी विषम वैषम्यापकः सर्ववानती नासेरद्विसंकैर्यमागादे प्रमादशरयुक्तवस्तुता शिशिरोक्तवसन्तश्च ग्रीष्मोवाच शरदिमः शिशिराद्यस्मिति विद्याप्रेमोत्तरम् आदानं च तदोदत्ते नूनं प्रतिदिनं बलं वेगान् धारयित्वातविमुद्रक्षुदां निद्राकाशशमनस्वान्तशुभाशर्विरेतसा रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरं धारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं तु तान् प्रति दोषां कदाचित् कुप्यन्ति जितालम्बनपाचने हेतु संशोधनेषु तेषां पुनरुद्भवत् भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारं भ्रमणं प्रमादशालिषष्टिककौतुकं मुक्तमांसकृतादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृति देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्ववेहिता शान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं भूताद्यस्पर्शनो प्रायो निर्दिष्टस्य पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शित निजागतुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये नित्यम् उदाहार विहारसेवी समीक्षकारी विषयश्वसक्त दाता समसत्य परक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्य रोगा गुरुणामर्धसौविध्यं लघुनानातितुक्तता मात्रा प्रमाणनिर्दिष्टं सुखं यावत् विजीर्यते दोषधातु मलामूलं सदा देहस्य चञ्चलं समगत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च अनुप्राण्यान्तविकृत पित्तं पक्तुष्मदर्शने श्रुतत्रुटरुचि प्रभा मेधाधिशौर्यतनुमार्दवे
हृदयस्तमपि व्याप्ति देहस्थिति निबन्धनं स्निग्ध सोमात्मकं शुद्धं मिशल्लोहितपीतकं स्निग्ध सोमात्मकं शुद्धं मिशल्लोहितपीतकं यन्नाशो यस्मिन् तिष्ठति निष्पदत्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रया निष्पदत्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रया ओजक्षीणित कोप शुद्ध्यान शोक श्रमादिभिः विभेति दुर्बलो भीष्णं ध्यायति व्यतिकेन्द्रियं द्विच्छायो दुर्मनोरुक्षो भवेत् क्षामच तच्छये जीवनीय औषधक्षीर ओजवृद्धो पुष्टि बलोदयः पक्वाशय कटी सक्ति श्रोतास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं मात्रस्य तत्रापि पक्वादानं विशेषतः चय एव जयदोषान् कुपितं च भो विरोधयन् सर्वकोपे बलीयंसं शेषदोषा विरोधतः प्रयोगशम्योद्यादिमेकं योन्यामुदीरये नासो विशुद्धशुद्धस्तु शम्योद्यो न कोपये व्यायामादुष्मनातक्ष्या दलिताचरणादपि कोष्ठेषा अस्ति कर्माणि कृतत्वान् मारुतस्य च तथा तेभ्यस्रोतो मुखविशोधनात् बुद्ध्याभिषेकनात् पापात् कोष्ठं वायुश्च निग्रहात् उष्मनो अल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचकरसनामं दुष्टमामाशयगतं रसनामं प्रचक्षते अन्ये दोषभ्य एवादि को द्रवभ्यविषस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम् उष्मनो आमेन तेन सम्पृक्ता दोषदुषा च दूषिता सामा इत्युपदिशन्ति ये च रोगाः प्रयुज्यन्ते. श्लोकांतर्गत वेदांचे सार संस्काराची ही अमूल्य धार प्रत्येक उच्चार हो शुद्ध आणि सुंदर यशस्वी हो सर्व स्पर्धक निरंतर. यानंतर मी तृप्तीधनाची काटकर हिला आमंत्रित करते. तृप्तीधनाची काटकर. मी BMS फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे. माझं कॉलेज शांताबाई शिवशंकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अँड कॉलेज जत. रागातिरोगान् सततानुशब्दान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारुदितान् जगान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. शरीरजानां दोषाणां करमेण परमौषधं वस्तिविरेकोवमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्. विषप्रव्यानुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षसिद्धार्थ शास्त्रार्थ दृष्टकर्माशु चिकीर्षं बहुपद्मं बहुगुणं संपन्नं योग्य औषधम् अनुरुक्तसुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यरोगी विषपश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि मासे त्रिसंख्ये मागार्धे प्रमाचभृतः स्मृतः शिशिरोतः वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरसीमाः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदाने च तदा दत्ते नृणां प्रतिदिनं पदम् वेगान्नधारयेद्वात विमुद्रक्षवदृक्षुधा निद्राकाशमश्वास जृम्भाश्रुच्छिर्दिरेतसा रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीर्णधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तां प्रति दोषा कदाचित् कुप्यन्ति चितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधने शुद्धान् तेषां पुनरुद्भवः भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारे गृहणं क्रमा शालिषष्टिकमोधुम उद्गमं सहृदादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानां इन्द्रियोपशमस्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सदृतस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः अनुप्रतिकूलग्रहार्चनं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शितः निजाकर्तु विकाराणाम् उत्पन्नानै च शान्तये नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विशेष्वसक्त दाता समसत्यपरः समावान् आप्तोपसेवी च भवत्यलोक गुरुणामर्धसौहित्यं लघुणानातितृप्तता मात्र प्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीर्यति दोषधातु मला
मूलं सदा देहस्य तैचलः उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यगत्याच धातूनां क्षाना पाटवेन च अनुगृह्णात विकृत पित्तं भक्त्युष्मदर्शनैः शुश्रूषुचि प्रभा मेधा धीशौर्य तनुमातवैः स्लेष्मास्तिरत्व सन्धिबन्ध क्षमादिभिः प्रीणनं जीवनं लेपो स्नेहधारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात् स्मृतम् ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानश्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदस उच्यते निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतश्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते यदि दोषान् पञ्चधा शोधने च तद्विनुभो मनङ्काय शिरोरेकोष्ठविस्तृतिः खूप सुंदर गोष्टी. यानंतर मी पुरुष पदकाला आमंत्रित करते वर्षा माने. माझं नाव वर्षा माने, BMS फर्स्ट इयर, शरद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज येळगाव इचलकरंजी. रागानुरोगान् सततान् सत्तान् शेषकाय प्रसतान् शेषं वस्तुक्यमोहारतिजनान् योगो वैद्याय नमोस्तुतस्मै शोधनं चमनं चैति समासार्थ औषधं कृतं शरीरजान्या दोषांना क्रमेण परमौषधं वस्तिविरोधो वमनतथा तेलं मृतं मधु श्रीधैर्यात्मनि विज्ञानं मनोदौषधं परं विषद्रव्यानि उपस्थता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सस्य क्लिष्टं प्रत्येकं तदचतुर्विधं दक्षतीर्थशास्त्रार्थो कृष्णकर्मासु चेर्विषं बहुकल्पं बहुगुण संपन्न योग्य औषधं अनुरक्तसुचेतक्षो बुद्धिमानपरिचारक अर्धरोगी विषत्वशो ज्ञापक सत्वानि अपि मानसे द्विसंख्ये भागादे क्रमाद षडऋतव स्मृतं शिशुरोगत वसन्तच्च कृष्णवर्षाचरद्विवा शिष्यराभ्य त्रिपितैतु विद्यार्थ ऐनं उत्तरम् आदानं च दत्तावते पुनः प्रतिदिनं फलं वेगानधार्यत वार्त वीटो पुत्र क्षमसुकुष्टाम विद्रकास श्रमश्वास जन्मा अश्रु छर्दिरेतसाम रोगतु सर्वाति जायते वेग उदीर्ण धारणे निदान निर्दिष्टं तत्र भूयिष्ठं हेतु तानपति दोषा कदाचित् कुम्पन्ति जिता लग्नपाचने हेतु तर्जने शुक्ता तेषां न पुनरुद्भवम् भेषज अपेक्षितस्य आहारे पूर्णं प्रमातो शारीरषष्टिकभोगमनसभूताविति त्याग करण्याकरणांना इंद्रियोपशम स्मृतं देशकालविज्ञान आत्मविज्ञान सकृतं अनुवर्तनं हिताहितं सुप्तं दुःखम् आयुतस्य हिताहितं मानस्य तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदस्य उच्यते पक्वाशय कटिसक्ति श्रोतास्ति स्थानमात्रस्य तत्रापि पक्वाधातुविशेषतः पूरकर्त शिरप्रो पर्वाणि अमाशयरसं घ्राणं नाभि अमाशयरुद्रं रस निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सेत क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित क्वचित कर्माभ्यास क्वचित चेती चिकित्सस्य निष्फला आदित्यस्य नमस्कारे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मास्त्रस्य दारिद्र्य अजन्यदेशसंहारी जिव्हेवारी बलप्रदं भोजनांच्या अमृत भोजनांचे विषप्रदं शीतोद्भव दोषसंचय वसन्ते विश्वदैर्यं ग्रीष्मज अप्रकाले घनाते वार्षिकं आशु सम्यक्
धन्यवाद वर्षा. यानंतर पुढील स्पर्धकाला मी आमंत्रित करते मयुरी आबासाहेब कोळी. माझं नाव मयुरी आबासाहेब कोळी. मी BMS फर्स्ट इयरची विद्यार्थिनी आहे. माझं कॉलेजचं नाव शरद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इचलकरंजी जळगाव. स्टार्ट. रागातिरोगा सततानुशक्तान सेवशकाय प्रसुतान शेषा औषध्यमहारतिदानकाना यमपूर्ववैद्याय नमो तस्मै शोधनं शमनं चेति समासाधुक्षतं विदा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् अस्ति विवेकभवनं तेलं कृतं मधु हृदयात्मनि विज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषक्रव्यं पश्चात् रोगिकारचतुष्टयम् चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं लक्षतीर्थादशाष्टाकं पृष्ठकर्मासु चिर्विषं बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यम् औषधम् अनुरक्तसुचितक्षो बुद्धिमानपरिचारक अट्योरोगी सर्वस्यो ज्ञापक सर्वमानवी मासे द्विसंख्ये माघाते प्रमादशर्गतवस्मृता शिशिरोत्तम संदेश ग्रीष्मावर्षाशरद्भिमा शिशिराद्या स्त्रीभिः तैस्तु विद्या अदयम् उत्तरम् आदानं च तदागत्य नृणां प्रतिदिनं बलं वेगान्नधारेण कार्किपुत्र शवदुष्टुदां निद्रादाश्रमस्वाश्रुवाश्रुच्छतिरेतसां रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदिलनधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूमिष्ठमेति तानि प्रति दोषा कदाचित् कुप्यन्ति चित्तालङ्घनपाचनैः आयुर्वेदस्य उच्यते विराणी माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भट शारीरे सुश्रुतश्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यशः कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति निमेदिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते दोषधातुमलाकुलं सदा देहस्य चञ्चलः उत्साहोच्छ्वास विश्वास चेष्टा वेगप्रवर्तनैः सम्यक्तया च दोषाणां मोक्षाणां च पाठवेन च अनुज्ञप्ति विकृत अपित्तं मुक्तिउष्णदर्शनैः श्रुतकृतरुचिप्रभा श्रुतकृतरुचिप्रभा मेधादिशौर्यतु मार्गवे श्लेष्मास्तिलत्वस्निग्धत्व श्रद्धिबन्धक्षं क्षमादिः पीडनं जीवनं लेख स्नेहोद्धारणे पूरणे गर्भोत्पादस्य धातूनां श्रेष्ठकर्मक्रमात् स्मृतम् वाशकटी शक्ति श्रोतास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं तत्रापि पात्रस्य तत्रापि भगवाशाय विशेषता नाभिरामाशय स्वेदोदसिका रुचिरं रसो दृक्स्पर्शनं पित्तश्च नाभिरत्र विशेषता पूरकण्ठशिरक्रोम पर्वणि आमाशय रसो मेघं ध्यानं च जीवा च कपस्य सुतरामुरम् त्यागप्रज्ञाप्रादोनाम् इन्द्रियोपशमे स्मृति देशकाल आत्मविज्ञानं सदा सौकृतस्य अनुवर्तनम् अथर्ववेदिका शान्ति प्रतिग्रहार्चनम् सुंदर मयुरी. यानंतर मी पुढील स्पर्धकाला आमंत्रित करते नेहा नानासाहेब टाकळे.